Welcome back, students. We were doing this amazing elegy written by Walt Whitman on the death of Abraham Lincoln, the President of America. This is 4:30 now, and I'm shooting this video for you 4:30 a.m. Okay? आप लोगों को इनको सुनने का टाइम नहीं मिलता. इतना सारा ऑनलाइन वर्क है. Small baby at home. I'm 6 7 hours in the college and then coming back making these videos and PDFs for you. इट्स वेरी स्ट्रेंज बेटा कि हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं और आप लोगों को इतना भी टाइम नहीं मिलता कि आप इन वीडियोस को देखें. इट्स ऑनेस्टली आई मीन वी थॉट दैट वी विल बी हमारे बच्चे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे. वो हमें किसी वील हैव टू एक्चुअली, अगर ऐसा डायरेक्टरेट कहती है कि भाई आपको कितने लोगों ने देखा, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं और कितने लाइक्स हैं, तो आई थिंक वील हैव टू आस्क सम अदर पीपल टू डू इट फॉर अस. आवर ओन स्टूडेंट्स हैव नो टाइम टू डू इट फॉर अस. वेरी सैड. मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था उस दिन. बट एनीवेज, आई मीन जस्ट इमेजिन कि मैं सुबह 3 से 4 बजे बैठ के आपके वीडियोस बना के आपको अपलोड कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में सो रही होंगी. I've been working the entire day and then in the middle of the night I'm getting up to do this work for you. Anyways, we were doing this elegy. In the swamp and secluded recesses, a shy and hidden bird is warbling a song. And he says that in this beautiful, it is spring and it's beautiful everywhere. And there is this water has collected. Swamp is daldal or marsh. कहीं किसी secluded recess मतलब एक जो recess कोना या एक what do you call it, a crevice, उसके अंदर a shy and hidden bird is warbling a song. It's a beautiful thrush, the bird, which is warbling means singing a beautiful song. She's shy and hidden means she does not want to come in front of the world. She wants to, she must be having some pain in her heart which she wants to express in solitariness. No, she doesn't want to come in front of the world and proclaim her grief. Okay. The solitary, the thrush, the hermit withdrawn to himself. Okay, so there are two birds. We're talking about the thrush and the hermit bird. Okay, sorry, the thrush, which is also the hermit bird or the hermit over here. It says the hermit withdrawn to himself. Thrush is like this amazing, saint or a sage who goes to the caves in some solitary mountains, avoiding the settlements. It does not want to get in touch with this modern world. It does not want to get in touch with the urbanic, gruesome, very cruel, very anti-spring kind of a settlement. Okay, sings by himself a song, and he's singing a song to himself. Song of the bleeding throat, death's outlet song of life. Song of the bleeding throat. Bleeding throat means, beta, now when the thrush is singing, he's letting out his pain, and in that pain, it feels as if there is some kind of a pain that is hurting his entire inner and outer self. What is a bleeding throat is the physical self being targeted, as well as the spiritual and the mental and the other beings, other levels that we live on. Everything has been bruised, everything has been targeted. Song of the bleeding throat, death's outlet song of life. Now this is beautiful. Death's outlet song. डेथ के दुख को बाहर निकालने के लिए वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग एंड दैट गिव्स अस लाइफ. That is a beautiful thing to please note, beta. For well, dear brother, I know if thou wast not granted to sing. He says, dear brother Thrush, I know very well that if you were not given this quality of singing, thou wouldst surely die. Then you would have died for sure. How? Now tell me, beta. I have said often, one of my favorite poems, Home They Brought a Warrior Dead. I think I might have recited this to you previously also. She no soon nor uttered a cry, and all her maidens watching said, she must weep or she will die. आपने ये मंज़र बहुत बार ज़िंदगी में देखा होगा कि जब हम बहुत गहरे दुख से गुजरते हैं तो हमारा रोना बहुत ज़रूरी हो जाता है. अगर हम नहीं रोएंगे तो शायद हमारा we can have a nervous breakdown and we can even die. We can even have a heart attack or maybe a stroke.
सो वीपिंग इज परगेशन. वीपिंग हमारे अंदर की जितनी भी फीलिंग्स है उसको एकदम से बाहर निकाल देता है. जो फीलिंग्स हमें डिप्रेस कर रही हैं, हमें सप्रेस कर रही हैं, उन फीलिंग्स को हम बाहर निकाल देते हैं रोने से. तो कितनी ब्यूटीफुल बात कह रहे हैं. विटमैन कह रहे हैं कि डियर थ्रश, मैं जानता हूँ कि मुझे पोएम लिखने की ईश्वर ने गिफ्ट दिया और तुम्हें गाने का. अगर ये दोनों गिफ्ट्स हमारे पास नहीं होते तो लिंकन की डेथ पे शायद हम लोग खुद भी मर जाते. वी कुड हैव डाइड ourselves because the pain is so intense, the grief is so vast that you are singing your soul out and letting that pain out, and I am writing this poem to bring that grief out from me. And how amazing is that beta? You have to understand the death's outlet song of life, the song which is giving vent to the pain inside which has been caused by death will give us life. We will live because we could weep. We will live because we could feel the pain and express it. Okay? Yeah. Over the breast of the spring, the land and amid cities. Now, say this is a beautiful description of the voyage of the hares. Over the breast of the spring, it is like the middle of the spring. The land, his dead body is being carried through land, cities, lanes, old woods, through the entire America, where lately the violets peeped from the ground. पुराने जंगलों में जहाँ पर अभी थोड़े दिनों पहले ही violets are springing up from the ground, spotting the grey debris. और जहाँ पर भी ग्रे हल्के हल्के वो ग्रे कलर की या डर्ट पड़ी है, डेब्री पड़ी है, वेस्ट पड़ा हुआ है, उस पर छोटे 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 वायलेट्स उगने लगे हैं. amid the grass in the fields each side of the lanes, और घास उगी हुई है लेन्स के दोनों साइड. passing the endless grass, और बड़े बड़े pastures को पास करते हुए. passing the yellow speared wheat, अभी गेहूं में दाना आने लगा. इस येलो स्पीयर्ड मतलब उसकी जो ऊपर वाली जो बाली होती है ना, उसके अंदर दाना आने लगा, वो पकने लगा है. एवरी ग्रेन फ्रॉम इट्स श्राउड इन द डार्क ब्राउन फील्ड्स अप्रिजन. कितना अजीब बात है कि इस स्प्रिंग में जब हर छोटा बीज अपने कफन को हटाकर डार्क ब्राउन अर्थ के अंदर से स्प्राउट करने लगा, स्प्रिंग करने लगा, ऊपर उठने लगा, पेड़ बनने लगा, पौधा बनने लगा. passing the apple tree blows of white and pink in the orchards, और सेब के पेड़ों में बेटा पिंक एंड वाइट कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर्स जब इस समय आ रहे हैं. carrying a corpse to where it shall rest in the grave. We were carrying the dead body of our great president so that he can rest in his grave now and not be bothered about people like us. हमारे बारे में उन्होंने अच्छा सोचा और हमने उन्हें मार दिया. तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो जाके रेस्ट करें, हमारे बारे में ना सोचें. नाइट एंड डे जर्नीज ऑफ कॉफिन, रात दिन उनका जो कॉफिन था वो पूरे अमेरिका में जर्नी करते हुए इट इज़ गोइंग टू रेस्ट इन इट्स ग्रेव. इट्स गोइंग टू रेस्ट इन इट्स final destination. Now Abraham Lincoln is devoid of any worry of the nation, any worry of slavery, what has to be done, what not has to be done. एंड आई लव दिस लाइन बेटा, एवरी ग्रेन फ्रॉम इट्स श्राउड. मतलब कितनी अजीब बात है कि वो अप्रैल जब एक मरा हुआ बीज, दफनाया हुआ बीज भी अर्थ से बाहर निकल के एक ब्यूटीफुल फ्लावर या एक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट में बदल जाता है, उस समय प्रेसिडेंट हैज़ टू go, he has to die. So very very beautiful the contrast that the elegy draws from the time the death occurred and to what death is a beautiful thing that you really need to ponder about. It is spring when everything is flowering, and it is spring when the political or the presidential scenario of America has actually dipped its lowest. You get my point? So the contrast makes the elegy even more valuable, even more amazing, it heart rending, even more appealing to the student of literature. So basically try and read these amazing beautiful. It's not कि ऐसे बैठ के कुछ लिख दिया होता है. It takes an effort, it takes a lot of pain. It is almost like the pain of delivering that
you have to that a poet undergoes while writing something as beautiful as every grain from its shroud in the dark brown fields uprisen. You know, everything which is dead is coming to life, and the most important person in America is coming to death. Okay.